Good morning, students. So, today in this video lecture, I am going to discuss the cyclic structure of glucose. Dear students, I have already discussed the classification of carbohydrate and the reactions of glucose, which is a very important monosaccharide. Now, after reactions of glucose, we confirm the structure of glucose, and the glucose have two different type of structure. One is your open chain structure and another is your cyclic structure or ring structure. Now, if we observe the open chain structure of glucose, and this is your glucose, CHO, we have CH, OH, COH, H, CHOH, then we have CHOH, and this is your CH2OH. तो ये स्ट्रक्चर हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल देख चुके हैं दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर डी ग्लूकोज. सो डी इज योर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज द स्मॉल d. So this small d refers to your optical rotation, while this capital D, it will refer your relative configuration. Now this open chain structure of glucose, it will explain most of the properties of glucose, most of the reactions of glucose. कहने का मतलब ये जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज के मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, बट it fails to explain some of the reactions of glucose. Now, what are these reactions? So, although glucose has an aldehyde group, glucose has an aldehyde group, that is, it has your CHO group. आप देखिए ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है. सो ऑल्दो ग्लूकोज हैज CHO ग्रुप, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन 2,4 DNP test or 2,4 DNP reaction. It will not give any 2,4 DNP test, or you can say 2,4 DNP reaction. Second, it will not form addition compound with sodium bisulfite. So it will not form any such addition compound with your sodium bisulfite, which is an important property of your aldehyde group. And the second point is the pentaacetate of this glucose. The pentaacetate of glucose, pentaacetate of glucose will not react with hydroxylamine. The pentaacetate of glucose will not react with hydroxylamine. कहता है इससे मेरा क्या इन्फेरेंस आया? ये जो हम कह रहे हैं कि although it has aldehyde group, it will not give 2,4 DNP test. It will not form addition compound with your sodium bisulfite.
The pentacetate of glucose will not react with your hydroxylamine. So, what does it mean? It means the absence of, it means the absence of free CHO group. It means the absence of free CHO group. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है बट ये फ्री नहीं है. वन मोर important point you can say, or you can say one important objection to your open chain structure. The objection is glucose exists in two different crystalline form. Glucose exists in two different crystalline form. That is your alpha and beta. Alpha glucose and beta glucose. Where alpha has a melting point equal to 419 Kelvin, while beta glucose have a melting point equal to 423 Kelvin. So alpha glucose have a melting point 419 Kelvin. However, the beta glucose have a melting point 423 Kelvin. It means it must have a hemiacetal form. Now hemiacetal form means this OH group, this aldehyde group and this OH group, they must be joined with a oxygen link. So that's why it has a hemiacetal link. So to explain the above idea, or to explain the above points, Haworth suggests a six-membered cyclic structure, a six-membered cyclic structure which is similar to a heterocyclic compound, which is similar to a heterocyclic compound called pyran, and therefore the structure is known as your pyranose structure. Therefore the structure is called pyranose structure. हम जब आगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी तरीके से फ्रुक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा. But the cyclic structure of fructose resembles with heterocyclic compound furan. तो उसमें बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, जबकि ग्लूकोज के लिए हम लोग बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर. Now what is pyran? The pyran is, this is your pyran. This heterocyclic compound, this is your pyran. This compound is called pyran. So the structure of glucose similar to this six-membered ring, and that is called your pyran. So this is the structure of your cyclic structure of glucose. This is H, OH, H, OH, OHH, H, OH. This is H and CH2OH. So let us observe the number of carbon. The number of carbons are 6. Now how we can say there are 6 carbon? This is carbon number 1. This is
1, this is 2, this is carbon number 1. ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1. This is carbon number 2. This is carbon number 3. This is carbon number 4. This is carbon number 5, and this is your carbon number 6. So the formula is C6H12O6. Now, glucose exists in two different forms. One is your alpha glucose and another is your beta glucose. कहते हैं ये अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है? तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर called as anomers. They are called as anomers. इनको हम लोग क्या कहेंगे? एनोमर कहेंगे. Now the question is, what are anomers? ये एनोमर किसको कहते हैं? ये एनोमर क्या होता है? तो एनोमर्स differ in configuration. Anomers differ in configuration of OH group. Configuration of OH group at कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 1 को एक्चुअली हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं. ये जो कार्बन नंबर 1 हमने लिखा है ना, सो दैट कार्बन नंबर 1, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज योर एनोमेरिक कार्बन. इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं. अब सवाल उठता है कि इन अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये किस फॉर्म का है? तो ये अल्फा फॉर्म का है. दिस इज योर अल्फा फॉर्म. इसलिए बुक में आप देखिएगा लिखा हुआ है वी हैव अल्फा. अल्फा के बाद आप देखिएगा हाइफन फॉर सेपरेशन. फिर आप देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉजिटिव, सॉरी अल्फा, देन वी हैव अल्फा, देन वी हैव हाइफन, नो डाउट सेपरेशन. फिर देखिएगा कैपिटल डी. कैपिटल डी मीन्स ग्लूकोज इज ए डी क्लास ऑफ शुगर और डी सीरीज ऑफ शुगर जिसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है डी. अल्फा डी, अगेन वी हैव हाइफन मीन्स फॉर सेपरेशन. फिर अब देखिएगा ब्रैकेट के अंदर होगा पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन मीन्स इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ये पॉजिटिव साइन कहने का मतलब हुआ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. एंड देन अगेन वी हैव हाइफन और तब देखिएगा लिखा होगा ग्लूकोपाइरानोज. इट इज योर ग्लूकोपाइरानोज. ग्लूकोपाइरानोज मीन्स इट इज ग्लूकोज इन योर पाइरानोज फॉर्म. Glucopyranose means glucose in the pyranose form. So this is alpha form. Then what will be the beta form? तो देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर एनोमर. They differ in the configuration or arrangement of OH group at carbon number 1 because your carbon number 1 is referred as anomeric carbon. कहता है ये जो कार्बन आपका है दिस कार्बन इज योर एनोमेरिक कार्बन. तो इसमें क्या करेंगे? OH को अप कर देंगे और H को नीचे लिख देंगे. सो द बीटा फॉर्म इज योर सिंपली दिस इज योर, जस्ट यू ऑब्जर्व. सो दिस विल बी योर OH, this is your OH, this is H, this is H, this is OH, this is OH, this is H, this is H, this is OH, and this is your H, CH2OH. So you can say this is your beta D glucopyranose. कोई पूछे कि तब इसका नाम क्या लिखेंगे? बस सब कुछ यही रहेगा, केवल अल्फा के बदले आप बीटा लिखोगे. Then its name is beta, again hyphen. कैपिटल D means it is D series of sugar, again hyphen. फिर आप लिख देंगे प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड देन इट इज योर glucopyranose. So it is your beta D glucopyranose
while it is your alpha D glucopyranol. So this is your the cyclic structure or ring structure of glucose. So I hope everything is clear about glucose, that is its structure, open chain or cyclic structure, and the reactions of glucose. Thank you.